Hello again and welcome back to another session of Commerce class with me, Suman Rathore. Students, Henry Fayol, the father of general management, gave us 14 principles of management. And these principles of management are very much relevant to real business situations as they provide managers with managerial decision making and control. Now we have already covered the first 4 principles in our previous video. So today I'm going to take the next 5 principles. So our next principle is principle of unity of direction. Now according to this principle, there should be one head, one plan for the group of activities having the same objective. And all the units of an organization should be moving towards the same objective. Now this principle helps in bringing coordination and unity in action. क्योंकि अब आपके ऑर्गेनाइजेशन का वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और डिवीजन काम कर रहा है फॉर द अचीवमेंट ऑफ इट्स ओन ऑब्जेक्टिव, फॉर द अचीवमेंट ऑफ इट्स कॉमन ऑब्जेक्टिव. ओके, एंड इट विल हेल्प इन चेकिंग अननेसेसरी डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. नाउ फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मोटरसाइकिल्स और कार्स दोनों बनाती है. तो वो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के मोटरसाइकिल का डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए एंड कार मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट अलग होना चाहिए. एंड द एम्प्लॉयज़ ऑफ दैट पर्टिकुलर डिपार्टमेंट और डिवीजन should work towards the achievement of goal of its own department or division. Okay? Now the positive effects of this principle is that there will be better coordination throughout the organization. क्योंकि अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ना सिर्फ अपने गोल को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेटेड वे में काम कर रहे हैं, बल्कि उससे ऑर्गेनाइजेशन का ओवरऑल गोल भी अचीव हो रहा है. और देयर विल बी यूनिटी ऑफ एक्शन, क्योंकि अब सारे डिपार्टमेंट्स मिलके या फिर सब डिपार्टमेंट्स के अपने इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयज़ हैं वो मिलके काम कर रहे हैं फॉर द अचीवमेंट ऑफ गोल. और जब कोऑर्डिनेशन और यूनिटी ऑफ एक्शन होगा ऑर्गेनाइजेशन में, then there will be easy achievement of organizational goals. Now the negative effects of violation of this principle is that there will be confusion in the minds of workers, because now workers confuse होंगे, उन्हें ये पता नहीं होगा कि उन्हें कौन से प्लान पे काम करना है और कभी वो किसी प्लान पे काम करेंगे, कभी किसी प्लान पे काम करेंगे. So then there will be duplication of efforts and resources. और ये जो डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स एंड वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज हैं, इससे ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी भी एडवर्सली इफेक्ट होगी. नाउ आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट. नाउ अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, द वर्ड आई शुड बी रिप्लेस्ड बाय द वर्ड वी while working in a big organization, or we can say that interest of an organization should be given priority over the individual interest of an employee if there is any conflict between the two. And employees should surrender their personal interest before the general interest of the enterprise. Now, इस principle की basic requirement ये है कि managers or management and the employees should be honest and sincere to each other. And if there are any differences, if there are any mutual differences between the two parties, then those differences or those misunderstandings should be reconciled immediately. And managers should also not misuse their powers at any cost. Now, for example, suppose कीजिए किसी worker का main objective है to increase his wages by increasing the number of units he produce. पर अगर उसके ऐसा करने से अगर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज ज़्यादा हो रहा है या फिर मशीनरी के ब्रेकडाउन का रिस्क बढ़ रहा है, then that worker should not do that. He should stop doing that, and the worker should give preference to the interest of the organization and stop wasting the resources. Now the positive effect of this principle is that कि इंडिविजुअल्स अपने पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स, अपने पर्सनल गोल्स को एक तरफ रख के दे विल कंसंट्रेट ऑन द ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स एंड देयर विल बी बेटर अलाइनमेंट बिटवीन ऑर्गेनाइजेशनल एंड इंडिविजुअल गोल्स. Now the negative effect of violation of this principle is that
Now the employees will concentrate more on the achievement of their personal goals and they will deviate from the path of achievement of organizational goals. जिससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में यानी कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ में कॉन्फ्लिक्ट्स अराइज होंगे और ऑर्गेनाइजेशन में अनहेल्दी एनवायरनमेंट क्रिएट हो जाएगा. Now our next principle is principle of remuneration of employees. Now remuneration plays an important role in motivating the workforce. As such, whatever method of remuneration is adopted by the company or organization, it should be fair and reasonable and should give maximum satisfaction to both the employees and the organization. ये रेम्यूनरेशन इतनी होनी चाहिए कि एम्प्लॉयज़ एक रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सकें एंड एट द सेम टाइम it should be within the paying capacity of the company. And if possible, then some non-financial benefits like free education, medical and residential facilities, etc. should also be provided. For example, if a worker is asked to work extra time after his day's work, तो फिर उस वर्कर को उस एक्स्ट्रा टाइम के लिए एक्स्ट्रा एडिक्वेट वेजेस भी मिलनी चाहिए. And that wages should be within the paying capacity of the company so as to provide satisfaction to both the employees and the company or organization. Now the positive effect of this principle is that if the workers are financially satisfied, then उनका motivation level भी higher होगा और वो companies के goals को achieve करने के लिए better और higher commitment के साथ काम करेंगे. Then secondly, अगर कंपनीज में एम्प्लॉयज़ एंड मैनेजमेंट दोनों के अंदर एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कंपनी में बेटर एनवायरनमेंट है, तो कंपनी की फंक्शनिंग भी स्मूथ होगी. नाउ द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल इज दैट, एज आई सेड अर्लियर, रेम्यूनरेशन प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज़. सो अगर एम्प्लॉयज़ एडिक्वेटली पेड नहीं होंगे तो उनमें डिससैटिस्फैक्शन ज़्यादा होगा और वो ऑर्गेनाइजेशन के साथ टिक कर काम नहीं करेंगे और जल्दी ही ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देंगे फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़ आउटसाइड, जिससे कि लेबर टर्नओवर ज़्यादा हो जाएगा. एंड सेकेंडली, कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में अनहेल्दी रिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर्स. नाउ आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. Now centralization means concentration of power and authority in few hands, और वो few hands है हमारा top level management. And decentralization means dispersal of power and authority to lower levels of the management. Now an organization can never be completely centralized or decentralized. It all depends upon the size of the organization. Generally, small firms have absolute centralization because the management orders go directly to subordinates. जबकि big concerns या big organization में there is less degree of centralization क्योंकि managers के orders को एक proper chain के through जो operative level होता है वहाँ तक पहुँचना होता है. So, there should be a balance between centralization and decentralization for the proper functioning of the organization. Okay? For example, the major decision and activities of setting up of goals, plans, policies and strategies can be centralized, but there should be proper communication and supervision which is required for implementation of those plans. As such, कुछ पावर का डिसेंट्रलाइजेशन करते हुए मिडल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट को भी पावर्स एंड अथॉरिटीज़ डिलीगेट की जाती है ताकि मैनेजमेंट के या ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव किया जा सके. नाउ द पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ दिस प्रिंसिपल इज दैट by establishing a balance between centralization and decentralization, benefits of both centralization and decentralization can be availed. And अगर हम authority कुछ operational levels को देंगे तो फिर operational levels को जहाँ पे भी quick decisions लेने की ज़रूरत है वहाँ उन्हें पूरा top level management तक जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वे quickly
इन द इंटरेस्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिसीजंस ले पाएंगे. Now, the negative effect of violation of this principle is that if there is no balance between centralization and decentralization, or we can say if there is excessive centralization, then there will be delay in decision making because lower levels के पास कोई authority नहीं है decisions लेने की. They have to go to the top level or middle level management for making any decisions. और अगर excessive decentralization है, अगर लोगों के पास ज़्यादा पावर्स हैं, ज़्यादा अथॉरिटी उनको डिलीगेट कर दी गई है, तो फिर देयर विल बी अ चांस ऑफ मिसयूज ऑफ अथॉरिटी. ओके, नाउ नेक्स्ट प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ स्कैलर चेन. Now this principle is very important from exam point of view also, and it says that an organization consists of superiors and subordinates, and there is a formal line of authority and communication from highest to the lowest level in an organization. And in normal course of business, this formal chain of communication, which is called scalar chain, it should not be violated. Okay? But in case of emergency, a shorter route can be used for communication, which is called gangplank. Now let's understand this with the help of this diagram. Now as you can see in this diagram, there are two lines of authority. One is 1 to Z and second is Z to A. Now suppose in normal course of business, 3 wants to communicate something to C. Then it has to go through like 3 to 4, 4 to 5, 5 to Z, Z to E, E to D, D to C. Now this line of communication is called scalar chain. Okay, but in case of emergency, 3 can directly contact C, and that communication, that emergency communication is called gangplank. Okay. The positive effect of this principle is that there will be smooth flow of communication without any gap, because now the information is going through all the levels or all the people in between. Okay, and secondly there will be clarity of authority and responsibility, क्योंकि हर level को हर person को पता है कि उस particular matter या उस particular communication के regarding उसकी क्या authority and responsibility fix की गई है. Okay. Now, the negative effect of violation of this principle is that there will be communication gaps in the organization, and that is why Fayol has suggested that gangplank should be used in emergencies only. It should not be used in normal course of business, so that there will be no gap in communication in an organization. And secondly, there will be confusion in authority and responsibility if the particular information doesn't go through all the concerned person or level in the organization. So now, after discussing all these principles in detail, we can easily say that these principles of management establishes a kind of cause and effect relationship. ये मैनेजर्स को ये बताते हैं कि अगर उन्होंने बिजनेस में कोई पर्टिकुलर स्टेप लिया या कोई पर्टिकुलर प्लान इम्प्लीमेंट किया तो उसके क्या इफेक्ट होंगे, उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे. That's all for today. Thanks for staying in tune and don't forget to like and subscribe my channel. Thank you and goodbye for now.